Welcome to Aquaspa Lab. Today I'm in Kolkata and I have a very good friend of mine, Gautam Da, and he has opened a beautiful store in Calcutta. So I am here in his store today. Let's walk in and find out. We'll be meeting Saket. He is one of the students there at the gallery of Gautam, which is by the name of Ripples. So let's walk into that. Hey Saket, how are you? Hello sir, how are you? Good. So Saket is here. He is one of the students at the Ripples gallery at Gautam Das gallery, and this is the beautiful creation of Gautam and the team. And they've just recently set this entire thing up. So I have been in touch with Saket, and in fact, Aquasquare Lab takes a lot of stuff. Especially we are the people in Gurgaon who are giving you the 2HR products, which we tie up with Ripples, and then that's where it comes from. But you will see that this is a beautiful creation that they have created here in Kolkata. And I would love to have something like this in Gurgaon in the near future. And obviously, I know I have the team here who can help me. So, Saket, over to you. Let's walk into, let's start from here itself. This is a beautiful tank. So, can you just tell me a little bit about this tank? This tank set up for the local shop style. Okay. Local shop में जैसे फीस रहता है, हाँ, वैसे एकदम वैसे perfect एक टाइगर बाग, घोड़ा मीस, हाँ, I saw a Little bit of- shark also. Yes, इसमें red tail shark. रेड टेल शार्क भी Red रखा tail हुआ है. shark. मतलब ये सारी वो फिश हैं जो बेसिकली एकदम लोकल शॉप में रहती हैं, नॉन प्लांटेड नॉन सेटअप. प्लांटेड सेटअप है, लेकिन Right, हम कुछ right, इसमें right. प्लांटेड डाला Right, है. जैसे right. वो लिली, कुछ पीछे में कुछ एपनोगेटम और साइबरस एस्पेन टाइप. हाँ हाँ. ठीक है. और और बाब्स है, basic- नॉर्मली basic setup. अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो ऐसा सेटअप से Perfect. सेट करने के लिए जो लोकल शॉप में मिलता है वही हम लोग रख रहे हैं कुछ अलग तरीके से. Right. And just इसी के साइड में is a contrast and it's a beautiful tank. This is a ADA tank, obviously, 120H. and 120H tank. And look at the light system is Skylight. skylight, yeah. Skylight hyper. And just look at the colors of the plant and even the basic fish like the platies, they have a very good color. So, मतलब इतना सुंदर बना रखा है ये, and obviously this is all Gautam Das and the team's creation. बहुत सुंदर setups हैं. Let's walk in. I am just going to walk you through with various. This is another beautiful setup. It's a kind of a amphibious setup where you have plants and the bark of the trees coming out, where you have terrestrial plants on the top and then aquatic plants at the bottom. Beautiful combination of ferns. मतलब alluvias है इसमें, जंगल प्लांट्स, plants है, and if you see the watering system is so cleverly done that you can actually see the water trickling down, which gives the continuous humid environment to the creepers which are growing here. So amazingly done, and you can see some just state of the art filtration systems from ADA. And this is the kind of things that we do and we are doing in India, and we definitely want to encourage people to get into this kind of hobby. And हम लोग जो है वो these are all like international standards now. I mean, it's अब जो है वो because of Gautam Da and the team, and then we are all trying our best to just get the level of the planted aquarium to a level wherein we are almost at the international. We have some very beautiful designers also, good artists, and just look at this shallow tank. It's very simple, subtle shallow tank. I will just ask you, Saket, so can you tell me more about this one? क्या है यार इसके अंदर? अभी तो जस्ट नया सेटअप है, 1 हफ्ता से 2 हफ्ता हुआ है. हमने Right. एल्गी इसमें क्रिएट किया है फॉर गोभी एंड बर्ड्स, मतलब छोटा जो आपका लोचेस वगैरह है उसके हाँ. एल्गी क्रिएट किया हुआ है. एल्गी क्लीन नहीं किया है इसमें, Right. इंटेंशनली. Right. तो अभी इसको क्लीन नहीं होगा, अभी फीस छोड़ेगा, उसके बाद दिखेगा कि क्या होगा. Right. अभी इसमें एक नया प्लांट्स है, द वाटर मिमोस, हाँ. वाटर मिमोसा.
Yeah, these are also like sensitive plants. They're like touch me not plants. Now, the thing that you have to look at the variety and the dynamics कि इसके अंदर हम क्या क्या possibility कर सकते हैं. अगर आपको सिर्फ एक्वेरियम बनाना है या आपको एक घर के साइड में या probably एक corporate office में रिसेप्शन में अगर आपको कुछ रखना है, you can do this. The only thing that you have to take care of that in environment like this हम लोग जो है वो 24 डिग्रीज का एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट अब ये सेटअप आप कहीं पर भी कर सकते हो. आप अपने घर पे, रिसेप्शन पे, स्पेशली कॉर्पोरेट ऑफिस, सीईओ's डेस्क, दीज आर द प्राइम लोकेशंस फॉर दीज काइंड ऑफ सेटअप्स. थोड़ा कॉस्ट के बारे में बताइए. कॉस्ट इट इज Cycle. सो इट्स एन आर्ट. आई मीन लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कॉस्ट क्या से आता है. अब देखिए मैं मतलब इट्स समथिंग लाइक एक पेंट ब्रश और एक कैनवस का कोई कॉस्ट मतलब मैं नहीं ले सकता. बट जब जो आर्टिस्ट उसको बनाता है उसका कॉस्ट डिफरेंट हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव यू अ कॉस्ट हियर. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर ऑल आर्ट. आई मीन आप सिंपली पानी के अंदर 4-5 पत्थर डाल के और वुड डाल के भी एक्वेरियम बना सकते हो. बट एक जब वो आर्टिस्ट के थ्रू वो वही चीज जब सेटअप जाती है तो ऑब्वियसली देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर दैट एंड द टाइम दैट द आर्टिस्ट हैज डिवोटेड इन दैट. समटाइम्स अ लॉट ऑफ न्यू आर्टिस्ट दे कम एंड उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यार मेरे को कुछ बनाना है बट वो मैं कहाँ बनाऊं, कैसे बनाऊं, वो डिजाइन आपके दिमाग में रहता है. बट जब आप ऐसी जगह पे आते हैं आपको ऐसा लगता है मैं ये भी ले लूं वो भी ये ले लूं. तो इसीलिए इफ यू नाउ पैन अराउंड हियर देयर इज अ डोजो सिस्टम व्हिच हैज बीन क्रिएटेड by the team and it is a beautiful thing. I can pick up driftwood from here and मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक अपना जो भी मेरा एक्वेरियम का सेटअप है उसके हिसाब से I can make a marking कि मेरा एक्वेरियम ये साइज का है. Probably I can pick some boards also and then what I can do is I can put driftwood so that I can see driftwood हुआ, rock हुआ या मेरा. तो ये this is like a perfect place. आप अपना टाइम लगा के put the music on, put the headphones on, come here, अपना टाइम लगा के यहाँ पर जो है वो सेटअप कर सकते हो, ग्लूइंग कर सकते हो. जब आपका पूरा सेटअप हो जाए प्रॉब्लली इसको एक प्लाई पे सेटअप कर सकते हो कुछ के तो पूरा का पूरा उठा के लेके जाते हो. दैट्स द ब्यूटी एंड द आइडिया बिहाइंड द डोजो सेटअप. एंड लुक एट द वेराइटी ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव हियर. यू हैव ब्यूटीफुल, दिस इज व्हाट कॉल्ड द बार्क, क्या बोल रहे हैं इसे, कॉर्क बार्क. So this is all natural wood and terrariums के लिए बहुत अच्छा होता है. Like you can see these are all the kind of setups they have already created on the fly. So this you can actually create it here. अपना यहाँ पर आप अपना वो करो and yeah like this. And then जब आपका ये हो जाए then you can just pick this up and put it inside the aquarium. Put some weight in it or plug and play. So मतलब and it is you can have multiple designs. Look at the beautiful designs on the top that they have done. In the free time, I'm sure Gautam that will be doing that. So team will do that. Gautam that has not time. So thanks to the team. बहुत अच्छा सेटअप है. यहाँ पर भी अगर आप देखो, I think there is already a series going on. हाँ, ये अभी नया सीरीज स्टार्ट हुआ है. Wherein this is a new tank which is the team has set up. Beautiful tank, beautiful colors, all green. एकदम नेचुरल सेटअप्स है. और इसमें जो रॉक्स यूज करे हैं मेरे ख्याल से ये कोर्स रॉक्स है, राइट. जस्ट अमेजिंग. एंड फ्रॉम द एक्सेसरी terrarium point of view also look at the beautiful terrariums that you have. There is a subsidy of ADA which is called DUA, जिसके अंदर कुछ उनके प्रोडक्ट्स आते हैं which is very nice, which you can see here. सेल्फ सस्टेनिंग टेरेरियम्स आप बना सकते हो. वेरी लो मेंटेनेंस, वेरी गुड फॉर रिसेप्शंस, वेरी गुड फॉर हॉस्पिटल डेस्क एंड कॉर्पोरेट डेस्क. इवन एम्प्लॉइज ऑल्सो हैज अ कॉर्पोरेट गिफ्ट ऑल्सो. इट्स अ वेरी नाइस थिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिसेज टुडे हैव अ वेरी मेंटेन टेम्परेचर. कुछ भी नहीं करना आपको, जीरो मेंटेनेंस है. जस्ट स्प्रे द प्लांट्स एंड this will be active. Look at these small terraria. And then you have the Bior. Also, this is a completely automated rainforest system, जिसके अंदर आपके terrestrial plants होते हैं, ferns होते हैं. There is a small cavity at the bottom which has the water and it just replicates the rainwater in it. And I just had a look at some of the very beautiful cories here. These are what, pygmies? No. कौन सी है? Paper cories. Look at the cories here. Very nice. And then there are some नीचे भी cories हैं, pepper हैं. Look at this terrarium here. And
This is the kind of terrarium which has some carnivorous plants in it. See, look at the beauty here. And this is again completely automated. Completely automated. एक बार आपने उसको design कर दिया, and you can right now this one has this a little open door thing, but you can do a completely closed one as well and keep some reptiles if you want in this as well. And this is the new setup which is coming up, and I'm very excited to see the setup. I'm sure पूरी team जो है वो लगी होगी इसके पीछे design करने में. Look at this beautiful pond which is here. Beautiful pond. And these are again those touch me not, but the more less sensitive version of the touch me not plants. So come over sometime and do visit us and get into planted aquarium. Remove that thing from your head of plastic aquariums now. We have grown up. India में सब possible है. Please upgrade your hobby. So thank you, Saket, for all the beautiful setup that you have shown me, and for a beautiful relationship that we had with Ripples in the past as well. So Aquasqual app and Ripples, I'm always going to be there to help you with whatever ideas and design that you have. We have solutions for everything. We have experts here. Gautam is an expert. The entire team has various types of experts. Gautam is an expert in the fish. Probably Partho is an expert in design. So we have the entire team. If you are looking for a bigger projects like a hotel or whatever, do call us and we will be able to help you out with that.